So today we are blessed to have some of the senior members of our Jamaat that have graciously volunteered their time to come share some stories with us. So we have some seniors from all around the country, and they will be sharing some memories, some life lessons they've learned, and just some of their experiences in Seva from their lifetime. So with that, we'll go ahead and get started. Our moderator for today is Sahil Panjwani. We kindly request everybody to make sure that they stay on mute because we will be asking our seniors lots of questions and we want to respect everybody and make sure that everybody is heard. So everybody, please keep your microphones on mute. And with that, I will pass it on to Sahil. Yali Madad. I'm very lucky to be here and to ask questions to the seniors of our Jamaat. So thank you for the opportunity, Myra. For the first question, I'm going to be saying them in both English and Urdu because of the language barrier that we have within the Jamaat. So I'm going to repeating it twice. Tell us your name and where you are from. आप बताएंगे आपका नाम क्या है और आप कौन से जमात खाना से हो. पहले क्वेश्चन जाता है हमीदा आंटी को. हमीदा आंटी, आप ज्वाइन किए? Okay, let's come back to Hamida aunty. हम हमीदा वापस आएंगे. पहला क्वेश्चन जाता है महमूद पंजवानी आंटी को. Mahmood sir, are you still there? Mahmood sir, sorry. Mahmood sir. Oh, he's back. Mahmood sir, you're on mute. Mahmood sir. Okay, now it's okay. Yes. What's the... आप बता सकते हैं आपका नाम क्या है और आप कौन से जमात खाना से हो? मेरा नाम महमूद पंजवानी है. मैं न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर क्वींस जमात खाने से हूँ. Awesome, thank you. Next जाता है Nurbanu Ali. Sir. Auntie. आप म्यूट पे हो. आपसे बता सकते हैं आपका नाम क्या है और आप कौन से जमात खाने से हो? अब आप म्यूट पे हो. Nurbanu auntie. Yali Madad. Yali Madad. I'm from Chicago, downtown Jamaat Khana, and my name is Nurbanu Farooq Ali. Awesome, thank you. Nuri auntie. You said my name, Nuri Daya. I'm from Atlanta headquarters. Shukr. Next we have Neemat auntie. My name is Neemat Bogari, and I'm from Knoxville, Tennessee. Knoxville, Tennessee. Great. Roshan, sir. मेरा नाम रोशन सदरुद्दीन वीरानी है और मैं डालास प्लेनो जमात खाने से. Awesome. And Al-Nur, sir. Okay. My name is Al-Nur Somji and I'm from Orlando, Florida. Okay, thank you for the introductions. दूसरा question है कि Sahil, we have two more. Sorry, Hamida aunty is back. Hamida aunty, आप अपने आप को introduce कर सकते हो please? आपका नाम और आप कौन सी जमात खाने जाते हैं? आप mute पे हो Hamida aunty. Hello. जी. ग्लेनव्यू जमात खाने से बोल. हेलो, मैं ग्लेनव्यू में जाती हूँ. Very good, thank you. And Kareem sir?
Okay, I'm from Washington, D.C. My name is Karim Nadi. Yeah, originally from Afghanistan. Awesome. Thank you so much. All right, Sahil, we can start with the first question. Alrighty. पहला सवाल है कि आप बोल सकते हैं आप कितने सालों से सेवा में हो और कौन से सेवा इवेंट्स में आपने मदद करी है? पहला सवाल चाहता है नुरबानु Okay. आंटी नुरबानु आंटी. Okay. मैं 1982 से हूँ सर्विस में and joined in shoes company and I helped out in Padramani's 83 Padramani Molapad 83 first Padramani into US and in 86 Padramani I serviced there for shoes company and we had child care. We did that. And Shukamal, I'm still in Chicago shoes company. Oh, thank you so much. Thank you so much. Sahil, sorry, before we continue, we missed somebody. Zarina aunty, आप please introduce कर सकते हो अपने आप को? Zarina aunty, Zarina Budwani. Zarina aunty, आप mute पे हो. जी, there you go. या मेरा नाम जरीना बुधवानी है. मैं ह्यूस्टन टेक्सास से हूँ और मैं हेडक्वार्टर जमात खाने जाती हूँ. Thank you so Thank much. नो प्रॉब्लम. Sahil will continue with the questions. तो आप बताएं कि आप कितने सालों से सेवा कर रहे हैं और आप हम लोग को थोड़ा सा बताएं कि आप कौन से अपॉर्चुनिटी सेवा के कर चुके हैं अपने लाइफ में. तो Sahil, the next one. उसके बाद कौन से opportunities are part of it and then आपकी favorite memory from Seva. No, sorry, the next participant. We did Nurbanu. Mahmood. Mahmood, sir, you are on mute. I'll mute him. No, sir. Okay, sorry. That's okay. Go ahead. Okay, मेरा नाम महमूद पंजवानी है. मैं 7 साल की उम्र से कब्स में शुरू किया मैंने पाकिस्तान में. मैं पहले कब्स में था. कब्स में से फिर स्काउट में आया. स्काउट में से फिर रोवर्स में आया. रोवर्स में से फिर वॉलंटियर आया. उसके बाद मैं 1990 में न्यूयॉर्क आ गया था. तो 90 से फिर मैं यहाँ पे सेफ्टी में और वॉलंटियर में हूँ और ऑलमोस्ट 10 साल से मैं पीएमपी लीड हूँ यहाँ पे और आज मेरी उम्र 62 है. सो ऑलमोस्ट 52 समथिंग 52 ईयर से मैं सेवा कर रहा हूँ. Very good. Very nice. Awesome. All the years that you have served, आपका सबसे favorite activity क्या था? आप बहुत सारे सेवा के part में हुए हो, तो what was your favorite thing that you did? मैं लाइट माइक एंड डेकोरेशन कमेटी में अलियाबाद में था. तो सबसे फेवरेट पार्ट मेरा वो लाइट माइक एंड डेकोरेशन का था. Very nice. Thank you, Mahmood sir. You're welcome. All right, Sahil, who's next? Nuri aunty. So yeah, I have always been teaching REC, and that is the best thing that I have done. I've done many things. You know, all of us get into so many things, but the best thing was teaching and loving those children, because kids come from different kinds of homes. Some of them need extra attention. Some of them need love. So that's what I've been there for. Thank you. Which grade of REC did you teach? I have taught most of the lower grades, and then I got promoted to grade 10, 11, 12, and currently I'm teaching grade 12. Wow. And so it's wonderful
to make sure that those children who are going out into the world are good and they pick good as well, so that they continue to be on the journey of being good people. Yeah, I think teaching our younger generation is the most important thing for anybody who can help our society or even our Jamaat, really. I think that's very important. You are आपका so favorite right, memory, Sahil. आपका favorite memory क्या है teaching जब भी आप करते थे? You know, my favorite memory is kind of in my heart, sensing those children who need me, who need love. And when we are there and I share the experiences that I have been through, and all of us go through good and bad experiences, then they can relate to me. So that has been the good thing, is to bring out the authentic person in every student. Does that make sense, Sahil? Oh, 100%. That's perfect. Okay. Thank you so much. Thank you. Next, Roshan auntie. याली मदद याली मदद। क्वेश्चन था कि आप कितने सालों से सेवा में हो और कौन से सेवा इवेंट्स में आपने मदद करी है? मैं 9 साल की थी तब से मैं दरखाना गाइड के अंदर दाखिल हुई, बुलबुल के अंदर दाखिल हुई, बुलबुल में से शिक्षक, सेकंड शिक्षक, फिर गाइड में ज्वाइंट हुई दरखाना, और के साथ में वहां से फिर मैं गाइड के अंदर मैं ट्रेजरर के अंदर काम करी, ड्यूटी ऑफिसर के हिसाब से मैं काम करी, और मैं शॉर्ट टाइम के लिए वाइस कैप्टन का भी होदा थोड़े टाइम में निभाई थी। और फिर बाद में मैं करीमाबाद के अंदर आई, करीमाबाद की आरसी में थी, दरखाने के अंदर भी आरसी के अंदर मेरा मिशन क्लास के अंदर मैं मोहम्मद बापू मिशनरी के हाथ के नीचे काम करती थी। वो टाइम के अंदर मेरे को बहुत अच्छे अनुभव मिले हैं। और उसके बाद में करीमाबाद के अंदर भी आरसी के अंदर इस्माइली फिलोसॉफी का क्लास लेती थी। वहां से फिर मैं बांद्रा आई, तो बांद्रा में भी आरसी के अंदर बच्चे लोग को गिनान दुआ वगैरह में सिखाती थी। अभी मैं प्लेनो जमात खाने के अंदर एज अ वॉलंटियर 7 डेज की ड्यूटी दे रही हूँ। अभी आज मेरी उम्र 85 इयर्स की है। 75 इयर्स से मेरी सेवा के अंदर मौला बापा कबूल करे। Very nice. Very good, very good. Very nice. Thank you so much, Roshan auntie. Next we can go to Al-Noor, sir. Okay, thank you. I started my Seva in USA with Volunteer Resource Management, VRM, where I was the Jamaat Khana facilitator for Miami, and then assistant VRM lead for the Council for Florida. Following that, I was the chairperson for AKYSB for Council for 3 years, and chairperson for VRM for the Council for Florida for 3 years. Then I joined Focus and was going to major cities in USA, training teams regarding disaster management. And then I became the national logistic lead for the Golden Jubilee program, A Mystical Journey, where we had the musicians from all over the world who came to perform. I was in charge of their transportation, hotel, food, the different needs, including visas to enter USA. I traveled to every city they performed, and I made sure that they were comfortable in the different environment other than their own country. I was then blessed to be appointed as Jamati Kameh Sahib for Miami headquarters Jamaat Khana. And after that, I served on various boards and portfolio with the Council for Florida. Currently, I'm part of the national VRM team, helping VRM leads with nominations for local Jamaat Khana leadership. I'm also the IKEA coordinator for Orlando, and I'm also part of AKF fundraising for Orlando. I also do part assignments for Mandli Mukhi Kameh Saibans in Miami headquarters. Thank you.
Alnur sir, I see why you were busy tonight then. You have a lot on your plate. Absolutely. But it's sugar, it's Seva, so I'm happy to do it. That's awesome. So we're gonna change it up just a little bit. Alnur sir actually does need to go. He has some other commitments for tonight. So we're gonna change the order just a little bit. We're gonna ask Alnur sir the other two questions really quickly, just so he can hop off, and then we'll come back to going around the room. So Alnur sir, can you please tell us, you have, mashallah, such a wide history of Seva. Can you tell us what is your favorite memory of your time in Seva? Okay, so Mahira, I have a few. When I was the AKYSB chair for Florida, and at the end of the term, the national AKYSB chair told me that before I became chairperson, Florida was not doing well. And she was praying to Mola for a miracle. And she said that the miracle got answered through me because I brought Florida up to the level that it required. So that was like awesome to be a miracle for the national AKYSB chair. That's very sweet. Yeah, and then during the mystical journey, not only did I bonded with the musicians themselves, but also the teams who were under me from different cities where the musicians performed. One incident that happened that I cannot kind of forget, and that was that after my first meeting for organizing the AMJ Mystical Journey program, I went to a Jamaat Khana, and there was a gentleman who I didn't know was reciting Furman. And somehow something prompted me to approach the person to be part of my national logistic team. And that guy he accepted it, and he was so awesome that he was part of the success of the program. So I don't know what prompted me. I don't know whether it was Mola telling me, get this guy. I have no idea, but it gave me and it still gives me goosebumps when I think about it. And also as a Jamaati Kamra Sahib, after my duties were over, I used to go to say Yali Mada to Jamaati members, which they appreciated. As time went by, more and more Jamaati members were waiting for me to have a conversation with them about various things in their lives. I guided them to appropriate boards and portfolios if they needed help. And lastly, President Saiba for Florida had called me to congratulate me because Hazrimam had graciously blessed me with the title of Alija Sahib after the Diamond Jubilee. Those are my experiences and the sweet moments in my Seva life. Wonderful. Thank you so much for sharing. And then the last question for you, Alnur sir, is if you had to share one lesson from your time in Seva, then what would that lesson be that you would like to share with the Jamaat? The lesson that I've learned, there's a couple of them. That's while you are doing any Seva, do it with your heart, respect and humility. Then everybody will respect you and rely on you by opening up to you as to their needs so that you can help them better. And that the prayers that they give you after you've done your Seva for you and your family are the ultimate reward and very satisfying. And lastly, you need support from your family members when you are doing Seva because they are the backbone of the Seva that you are doing. So credit and kudos goes to them also. Thank you. Wonderful. Thank you so much, Alnur sir. And sorry we had to rush through your questions, but I know you have a tight schedule, but thank you so much for joining us. No problem. I'll stay for a little bit and then drop out. Sure. Thank you so much. So Sahil, we'll go back to the first question. So Kareem sir, would you like to continue? Would you like to tell us how long have you been part of Seva and what have all of your Seva experiences been? Yes, I was in volunteer since I was 12 years old. So at that time when I wasn't back home, I was non-badge volunteers. So I was working in the SHU community because my dad was a member of the SHU committee. So he was taking me to Jamaat Khan on Friday and asking me to help him. I gave the token to the Jamaat and I took the shoes to put on the shelf. So the good part, I think, I should say, at that time I was very short. I couldn't reach the top of the shelf. So they hired one more volunteers to stay with me and help me at that time.
So I did those, and also during the Khushali time, I was serving water to the Jamaat and working also in the Shu committee too. When I came to Pakistan, I saw different things, and that was exciting. It was very excited. So because back home in Afghanistan, we didn't have any connection with the council, with the organization. Those Jamaati members, they come to Pakistan for Didar, and they bring those ideas in Afghanistan and organize some young people to be volunteers. So in Pakistan, I didn't do anything, just I was helping during Didar in 86, I'm sorry. 86, we helped with the volunteers to go to set up the tent and chairs and all those things. When I came to America in 1990, I became a badge volunteers. So I started working as a professional volunteers here. I served in Washington, D.C. since I was here 89. Yeah, since in 1990, I started working with the Jamaat. At that time, we had a very small Jamaat Khana. So there was not many volunteers and not many Jamaati members. It was a few, I believe it was, if I'm not wrong, 250 families. So I did on that part, always serving, especially during the Khushalis, working with the food committee. Yeah, and also I was working outside of the Jamaat Khana for the security. Then in Homage ceremony, I was a part of the security team, and also in Golden Jubilee too. And I was working in Philadelphia, in Chicago, and Atlanta as a security team. Wow. Wonderful. And Karim sir, we miss seeing you in Richmond, Jamaat Khan. I know you went back to DC. I know. Yeah, I was in Richmond, Richmond. Jamaica, and I loved it. Yeah, I was so excited to be there, but unfortunately, it doesn't work out the business I had there. Right. I miss you guys. Yeah. Thank you so much for sharing it. We're We glad we you. were fortunate to have you in Richmond, Khana for as long as you were there. So Yes. Thank you so much. you should come and visit sometime. I know that's, yeah, I will, inshallah, if I get chance. Sure, Great. sure. Great. Sahil, who do Um, we have next? Next, can we have Zarina Auntie? Oh, you're on mute, Zarina Auntie, before you start. जरीना आंटी आप अभी भी म्यूट पे है, आप अपना माइक्रोफोन का बटन दबाए तो वो खुल जाएगा। Okay. क्या ली मदद? मौलाली मदद। Yeah, Malala. जी, मेरा क्या क्वेश्चन है? कि बोल सकते हैं आप कितने सालों से सेवा कर रहे हो और कौन से सेवा इवेंट्स में आपने मदद करी है? मैं जब इंडिया में थी तभी 75 से लेके 86 तक मैं शू कंपनी में, वहाँ इंडिया में शू कंपनी में थी। मैं और मेरे हस्बैंड तो साथ में थे, और इसके बाद 86 में हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ आने के बाद तो मोस्टली कुछ हुआ नहीं, लेकिन पिछले 10 साल से गोल्डन क्लब में मैं मेंबर तरीके गोल्डन क्लब में हूँ, और अभी कम्युनिटी मेंबर भी बन गई हूँ। और पिछले 2 साल मैं योगा क्लास में जाती थी, जो AGI योगा क्लास है, वहाँ मैं अभी हाल में 2 साल से वाइस कोऑर्डिनेटर बनी हूँ योगा में। तो अभी तो 10 साल में तकरीबन इतनी सेवा की, बाकी थोड़ी बहुत तो इंडिया में की थी। तो गोल्डन क्लब में भी हूँ और AGI गोल्डन योगा क्लास में भी कोऑर्डिनेटर तरीके से हूँ। Very good. Thank you so much, Zarina aunty. शॉर्ट है, शॉर्ट सेवा है, लेकिन All seva is big seva. No seva is too small. थैंक यू। Himmat aunty? Question.
क्वेश्चन ये था कि आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं और आप कौन से सेवा में पार्ट लिए हो? मैं 1978 से गुजरात में थी, तभी मैं ज्वाइंट हो गई थी वॉलंटियर में। और वहाँ पे इतना बहुत ड्रेस कोड के ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जमात की सेवा वॉलंटियर के नांदी में कैसा हेल्प करती थी। लेकिन वहाँ पे गुजरात में मैं आरईसी की प्रिंसिपल थी 4-5 साल तक। फिर मैं सिकंदराबाद आई, तो सिकंदराबाद में मैं थोड़ी साल सेवा नहीं करी, बट 3-4 साल के बाद मैं वॉलंटियर में ज्वाइंट हुई और गुसल कमेटी में भी ज्वाइंट हुई थी। फिर हैदराबाद आए, वहाँ भी मैं वॉलंटियर में ज्वाइंट हुई थी। और इसके बाद जब मैं 2012 में इधर आई नॉक्सविल, ऐसी थोड़ी वॉलंटियर की सेवा मैं इंडिया में करती थी, बट 2012 में मैं इधर आई। यहाँ मैं वॉलंटियर में ज्वाइंट हुई और 2-3 साल में सीएम में भी करी सेवा। एंड मैं जमात खाने में आरसीसी दुआ भी क्लास लेती हूँ, दुआ की क्लास लेती हूँ। और योगा क्लास में मैं टीचर हूँ, योगा में सीनियर को योगा कराती हूँ। और सेवा से मेरे को बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी मिलती है सेवा करने से। हिम्मत आंटी, अभी नेक्स्ट हम लोग का जूम का योगा सेशन होगा तो आपको लेना पड़ेगा। जरूर कराएंगे। Thank you so much. Sahil, the last one is? नीमत आंटी। No, I think Nimat aunty went, Hamid aunty. हमीद आंटी। आप म्यूट पे हो हमीद आंटी। हेलो हेलो याली मदद। हाँ याली मदद। मैं इधर क्वेश्चन था कि आप बोल सकते हैं आप कितने सालों से सेवा कर रहे हो और कौन से सेवा बैंक से आपने मदद करी है? मैं पहले इंडिया में थी, इंडिया में सुस कंपनी में 20 साल से सेवा दी। और नांदी रूम में भी नांदी भरने का सब, बैंड्रा में वो भी सब सेवा दी बहुत साल, 20 साल। और सुस कंपनी में 20 साल की सेवा दी। और फिर अभी एक साल से मैं इधर आ गई हूँ अमेरिका। मैं शिकागो में हूँ और शिकागो में मेरे वॉलंटियर में मेरे को मिला है, वॉलंटियर बनी हूँ मैं। और 1-1.5 साल से मैं वॉलंटियर की सेवा देती हूँ इधर बांद्रा इसमें जमात खाने में, शिकागो में ग्लेन व्यू जमात खाने में, और इधर सेवा देती हूँ मैं। Thank you so much. और गोल्डन जुबेली में मैं वहाँ इंडिया में सेवा दी थी। वहाँ भी मेरे को खड़े रखे थे गोल्डन जुबेली में सेवा के लिए। वहाँ भी मैं इंडिया में दी थी। हसनाबाद में जब ये हाजिर इमाम आए थे तभी वहाँ भी मैं सेवा दी थी हसनाबाद में उधर। और मेरी एज 76। Mashallah, very nice. Wow, Thank you so much, Hamid aunty. Sahil, before we move on to the next question, I'm just going to give a quick recap for anybody that joined late. We have a panel of 8 to 9 seniors that have volunteered their time, and they are joining us from all over the country. So we are going through these 8 to 9 Jamati members and asking them a few questions about their Seva experience for those of you who joined late. So far they have told us where they're from and all the different wonderful forms of Seva they have been a part of. And now, Sahil, you can go on to the next question. All right. For the next question, what is your favorite memory from your Seva? और आपका favorite memory क्या है सेवा करने से? पहले रोशन आंटी। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? आपका फेवरेट मेमोरी क्या है सेवा, जब आप सेवा कर रहे थे आपका फेवरेट क्या? फेवरेट मेमोरी मेरी जब मैं दरखाना अपना दरखाने के अंदर बापू मिशनरी के हाथ के नीचे मिशन क्लास के अंदर हैंडल करती थी, तभी मौला बापा के डैडी प्रिंस अली खान की पधरामनी का अनाउंसमेंट हुआ और उसमें अनाउंस हुआ कि मेहमानी के अंदर सिर्फ 2 जन आ सकते हैं।
तभी एक तो मिशा दरखाना नाइट स्कूल की प्रिंसिपल मुखियानी और मिशन क्लास का हेड के हिसाब से मेरे को चांस मिला। तो मैंने क्या करी कि मेरे हाथ नीचे दिलशाद भीमानी थी, वो मेरे को बहुत हेल्प करती थी। तो मैं बोली नहीं दिलशाद मेरे बदली में तू जा। फिर मैंने उसको भेजी और मैं सिंपल गाइड की लाइन के अंदर खड़ी रह गई सैल्यूट के लिए। मौला बापा के डैडी प्रिंस अली खान वहां से पास हुए। उसकी मीठी वही टाइम पे प्रिंस अली खान अपनी मीठी नजर मेरे पे डाली। वो जो नजारा है मेरे आंख के सामने अभी तक कायम है। और मेरे को हुआ कि मौला मेरी तूने ये आज मेरे को तूने तेरी नवाजिश से मेरे को निला डाला। Very sweet. Thank you so much, Roshan Wow. auntie. That gave me goosebumps. Yeah, Very that's, that's I don't even know if that's a बहुत अच्छा है, मुझे तो बोलने का कुछ I don't even- Thank you, Roshan auntie. Thank you so much. नीमत आंटी, नीमत आंटी, आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है? आप म्यूट पे हो. મારી ફેવરિટ મેમરી એ છે કે હું જ્યારે લિસ્બન દીદાર કરવા ગઈ હતી ત્યારે મેં વોલેન્ટિયરમાં નામ લખાવ્યું હતું, પણ વોલેન્ટિયરમાં મને ડ્યુટી બી મળી હતી, હોલમાં ડ્યુટી મળી હતી અને ડ્યુટી બધું ડ્રેસ આપણને ટી શર્ટ ને બધું બી મળી ગયું હતું, પણ હોલને ખોલવામાં ઓપન કરવા માટે થોડુંક મોડું થઈ ગયું, કારણ કે થોડીક કંઈક સિક્યુરિટીને કંઈક વાંધો હતો, તો એટલા માટે વોલેન્ટિયર બધા લીડર્સ લોકો બધાને ડ્યુટી આપતા હતા અને એ લોકોને ઘણી લીડર્સ બધા ભાઈ બહેનોએ ઘણી મહેનત કરી, બધાને ડ્યુટી આપી, પણ ઘણા ડ્યુટી વગરના રહી ગયા. એમાં મને હોલમાં ડ્યુટી હતી પણ મને ન મળી. પછી મેં કીધું ઠીક છે કાંઈ વાંધો નહીં. પછી હોલમાં જઈને હું બેસી ગઈ. પછી આગળ ત્રીજી ચોથી લાઈનમાં જ બેઠી હતી, ત્યાં એક લીડર્સ ડ્યુટી આપતા હતા. તો પછી મેં એને કીધું કે ઊભા થઈને મેં કીધું રિક્વેસ્ટ કરી કે મારી ડ્યુટી હોલમાં હતી પણ મને ડ્યુટી મળી નથી. તો પછી મને કે કાંઈ વાંધો નહીં બેન, તમે મારી બાજુમાં ઊભા રહી જાઓ અને પૂરી જમાતને લાઈનથી બેસાડો અને જમાતને જે જરૂર હોય, જે ચીજની જરૂર હોય એ તમે આપજો અને તમે અહીંયા ઊભા રહીને બધાને લાઈનથી બેસાડો. પછી હું અહીંયા ઊભી રહી અને મને ડ્યુટી એ રીતે મળી ગઈ. તો મોલા બાપાની મરજી હતી, મોલા બાપાનો રાજીપો હતો, તો મને હોલની અંદર ડ્યુટી મળી ગઈ ને ત્યારે મને ખૂબ ખુશી થઈ કે મને પહેલા તો ખૂબ મનમાં લાગી આવ્યું કે મને મારી ડ્યુટી હતી, મને ડ્યુટી મળી નહીં, હું સેવા ન કરી શકી મોલા બાપાની હુજુરમાં. પણ પછી જ્યારે મને ચાન્સ મળી ગયો તો હું ખૂબ ખુશી થઈ અને મોલા બાપાનો જો રાજીપો હશે અને એની મરજી હશે તો મને ડ્યુટી મળી ગઈ. અને આપણને જ્યારે મોલા રાજી થાય છે ત્યારે આપણને એ શું કામ આપે છે, એ મોલા બાપા આપણને સેવા આપે છે. તો ત્યારે બી મોલા બાપા મારા પર રાજી થયા અને મને ડ્યુટી આપી ગઈ. અને સુલતાન મોહમ્મદ શાહને બી એક શખ્સે પૂછ્યું હતું કે મોલા બાપા તમે રાજી થાવ તો શું મને આપો? તો સુલતાન મોહમ્મદ શાહે બી ફરમાવ્યું હતું મોલા બાપાએ કે હું રાજી થાવ તો હું તને સેવા આપું. તો એવી જ રીતે મને આ સેવા મળી ગઈ ને મારા મોલા બાપા મારા પર રાજી થયા અને એ મારી ખૂબ જ મોટી યાદગીરી છે. હું ખૂબ ખુશ થઈ ત્યારે કે મને ડ્યુટી મળી ગઈ. પહેલા તો મને ખૂબ જ લાગી આવ્યું થોડીક વાર, પણ પછી ડ્યુટી મળી ગઈ. શુકર મોલાનો. Wow. Thank you so much. મારી બહુ જ યાદગીરી, મોટી યાદગીરી છે. Very nice. મને ડ્યુટી આપી દીધી. Very સેવા કરવી આપણે મોલા બાપાને મરજી હોય તો આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ. સેવાનો તો આપણે ખૂનમાં છે કે આપણને મોલા બાપાએ આપ્યું છે કે તમે બધા સેવા કરી શકો છો, જેની ઈચ્છા હોય તો કરી શકે છે. પણ એમાં બી મોલા બાપાનો રાજીપો જોઈએ તો આપણને સેવાનો ચાન્સ મળે છે. આપણી બી હિંમત ને સબર જોઈએ અને મોલા બાપાનો રાજીપો જોઈએ તો આપણને સેવાનો ચાન્સ મળે છે. ત્યારે બી મને સેવાનો ચાન્સ મળી ગયો ત્યારે હું ખૂબ ખુશ થઈ. શુકર મોલા. Thank you so much, Nimmat auntie. Very sweet. Thank you so much. Sahil, who's next? Kareem sir. Yes, sir. Would you like to tell us your favorite memory? Yes. I think every single day when we do the Seva is a good memory, right?
But my precious memory was the Diamond Jubilee in Portugal. We meet all the volunteers from all around the world, and by saying one word, Yali Madat, so we know each other, we thought we are a family, right? And that was a very good memory in my life. So people all around the world with the same love for serving the Imam in his murid. Wow. So Wow. yeah. Thank you. That's I think amazing. that's a very that's a Yeah. very moving thought, because I think we often forget that even though we're all working in different disciplines, we're all working in different cities, different countries, our end goal is the same and our end Same. mission is the same. That's right. Yeah. So it's a very unique thing that joins us. Thank you so much for sharing You're that. welcome. Thank you. Wow. Next, can I have Nurianti? Nurianti, you're on mute. I'll mute her. No, you're still on mute, Nurianti. Can you click your microphone? Okay. There we Can go. you hear me? Okay, Yes. good. Question, Sahil. The question is, what आपका favorite memory क्या है? सेवा, जब भी आप सेवा कर रहे हो. Do you know that when I get in class, every time I get in class and I touch those children with my heart and they respond back to me, they're honest, they're open to understanding the role of the Imam and how to be good Ismailis, how to be good human beings. That is the best thing that I can do. And that is when I see that in them, that they are responding to wanting to understand that the Imam is not just a figurehead or somebody important, but much more than that. That makes me very happy. The belief and knowing that it's not just praying, but it goes beyond praying. It goes to the belief and to become a good human being that I'd really want them to be. Wow. Okay. Yeah, that's I Thank think teaching our kids is the most important thing, as I've said It before. is, yes, yes. And I if you, think, oh, sorry, go ahead, Sahil. I was saying, like, I also taught ECDC, so I think is very How it is. it's amazing. I did it a lot in the past. I've been busy with college, but I know it's like what it feels to the happiness it brings to, teach children. Yes. It's very, And let me just add one more thing. When I see those students from the past wanting to come back as teachers, that is the happiest moment when I see them in classrooms. It comes full circle. Yes, absolutely. I Thank feel you. the same way about Sahil. I was Sahil's dua teacher, and now I see him teaching other kids. So it makes me feel very good. that is very true. Yes. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Next, Nurbanu, Auntie. Yeah, besides for doing Seva and Shoes Company, I'm also a professionally seamstress. I sew a lot. So when Malawapa was here in Silver Jubilee, we had made this curtains on the stage with my sister-in-law helping me cut all the fabric and stuff, and had so many ladies helping me put the machine up and sewing, and that was the best memory. We had good time doing that Seva, and I have that in my mind, nothing like that ever. The satisfaction you get from doing the Seva, you love to do what you do, So, Wow. Yeah, I think. and any time there is anything that needs to be sold, I'm there every time. Be it for Girl Scouts, their function, their programs, making costumes for them. For this homemade ceremony, we did so many costumes for these children performing, and
besides that, I help in making sukrit for Jam at my place for every Fridays on Chandrat and love. Wonderful. Thank you. And I think, that's another beauty of our Seva is that हमारी जितने भी hidden talents है वो सब काम आती है. So And we're satisfied. able to do so many different things. Yeah. You get the satisfaction of knowing, you get the chance to do that seva, and it's very nice. Great. Thank you so much, Nirvana Auntie. All right, Sahil, I think we have 2 or 3 left from this round. Yes. Zarina auntie? Did you want to go? Zarina Auntie, आप mute पे हो. याली मदद Sorry. आपका फेवरेट मेमोरी क्या है आप जब भी सेवा कर रहे थे? हमारी फेवरेट मेमोरी वो थी कि जब मैं इंडिया में थी, हम लोग शू कंपनी में, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में करते थे शू कंपनी में, वुमेन्स में, लेडीज में। उस दरमियान हाजिर का दीदार हुआ था 1978 में, और हमारी शादी को भी 3 दिन ही हुआ था, और 13 जनवरी को मेरा बर्थडे था, और उस दिन हाजिर ने दीदार दिया था और हम लोग का हस्त मिलाप करवाया था। Oh, wow, that's so That's- exciting. that is दोनों का really हस्त cool. मिलाप कराया, और उस दिन मेरा बर्थडे भी था। Wow. वो हमारी सबसे अच्छी मेमोरी थी, और हाजिर माम ने उस वक्त हमको दुआ आशीष दी, वो भी हिंदी में दुआ आशीष दी कि Wow. आपको और आपकी फैमिली को खास दुआ आशीष। Oh, Shukr, wow. shukr. तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी मेमोरी थी उस तरह के दीदार भी हुआ, हस्त मिलाप भी हुआ, और उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मुझे बहुत ज्यादा, बस वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, बस वो मेमोरी मेरे लिए बस। Wow, very इसके nice. अलावा अगर कोई भी मेमोरी आए ना तो सब उसके नीचे है, बाकी ये सबसे बड़ी मेमोरी मेरे लिए। Wow. Very Wow. nice. Thank you so much for sharing that. That's awesome. Thank you very much. Thank you. Mahmood, sir? Mahmood sir? Mahmood sir? जी जी Okay, Mahmood sir, आप आपकी favorite memory बता सकते हैं कि आपकी सेवा की सबसे favorite memory क्या है? मेरी 3 मेमोरी है। एक तो सिल्वर जुबली के टाइम पे हम लोग सिल्वर जुबली का मौला बापा का स्टेज का डेकोरेशन करते थे। हमने वहाँ पे 1.5 महीने तक स्टेज का पूरा काम करा। फिर जिस दिन दीदार था उस दिन मैंने अपनी ड्यूटी और हमारे साथ पूरी टीम ड्यूटी, हमने बिल्डिंगों में चक्कर मारने की ड्यूटी ली। हम लोग दीदार में नहीं गए, लेकिन वो ना कुर्बानी की ड्यूटी होती है, उसको बोलते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों ने वो कुर्बानी की ड्यूटी करी, तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। दूसरी डायमंड जुबली के टाइम पे मैं कंस्ट्रक्शन टीम में था अटलांटा में, और हम लोग की टीम में हमारे लीड आके हमको पूछता है कि किसी को ट्रक चलाना आती है, जो सामान एयरपोर्ट पे लेके जाना है, वहाँ पे डेकोरेशन करना है पूरी टीम के साथ। Wow. तो मुझे वो मौका मिला, मैं कहा ठीक है मेरे को ट्रक चलाना आता है। तो हम लोग पूरा सामान वहाँ पे एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट पे हम लोगों ने मौला बापा का जो रेड कारपेट पूरा लगाया, फ्लावर लगाए, मौला बापा आए, वो कारपेट पे चले। हमको वो मौका मिला कि हमको पहले बोले थे कि तुम डेकोरेशन करके चले जाना, फिर बाद में आके निकालना। तो फिर हमको बोले कि नहीं अब तुम लोग रुको, मौला बापा को देखो और फिर जाना निकाल के। फिर Wow. दीदार के टाइम पे, मौला बापा के दीदार के टाइम पे मेरे को फोन आया कि आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ, आपके लिए एक स्पेशल ड्यूटी है। तो मैं तो कंस्ट्रक्शन की टीम में था, तो टी शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, और मैं वहां गया। तो मैं बोलते नहीं आप सूट पहन के आओ। मैं कहा अभी मैं सूट पहनने कहाँ जाऊंगा। बोले ठीक है काम करो, किसी से कोट लेके आ जाओ बोरो करके। तो मैं 2-3 जने के पास गया कि भाई थोड़ा सूट बाहर अपना कोट बोरो करने दो मेरे को कोई ड्यूटी दे रहे वो। तो मुझे किसी ने दिया नहीं। तो फिर मैं वहां गया, बोला कि नहीं हो रहा, तो मेरी जो ड्यूटी है आप किसी और को दे दो, कोई बात नहीं। तो बोला श्योर है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, श्योर है, आप किसी को दे दो वो ड्यूटी। आपने बुलाया उसके लिए बहुत थैंक यू। फिर मैं वापस, मेरे को दूसरी दफा बुलाया, फिर वापस मेरे को उन्होंने बोला कि नहीं आप नेक्स्ट टाइम आओ, लेकिन बिल्कुल सूट पहन के आओ। उस टाइम आप कोई भी काम नहीं करना, कोई और ड्यूटी में कमेंट नहीं करना। मैं कहा ठीक है। तो मैं सूट पहन के चले गया उधर।
तो मेरे को वहां जाके पता चला कि उस दिन मेरे को मौला बाबा दीदार देने आने वाले थे, तो मौला बाबा की गाड़ी का दरवाजा खोलने का था। Wow. That's a big opportunity. Wow. Wow. Mashallah. Very nice. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मेमोरी है। Wow. Mashallah. Very nice. Thank you so much, Mahmood sir. शुक्र मौला। और I'm glad आपको सूट पहनने का भी मौका मिल गया था। लास्ट फर्स्ट डे में नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड डे में सही से हुआ। वेरी थर्ड टाइम में हो गया। थर्ड टाइम्स अ चार्म, राइट? third बोलते हैं ना, थर्ड टाइम्स अ चार्म। हाँ, तो शुक्र मौला का, मेरे को इतना अच्छा मौका मिल गया। मौला बाबा के दीदार के टाइम आए, मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, मौला बाबा बाहर निकले, शुक्र मौला। Very nice. Shukran, Thank you so shukran. much, Mahmood sir. Wow. And then last, I think we have Hamida aunty, Hamida Jumani. आप माइक्रोफोन अपना अनम्यूट कर देवे प्लीज। जी हेलो जी। हेलो तो Hello. हमीदा आंटी, आप अपनी फेवरेट मेमोरी बताएं। आपकी सेवा की जितनी भी हिस्ट्री है, उसमें आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है? मैं एटलांटा जमात खाने का पाट के कवर सब सी थी, और मेरे को ऐसा गोल्डन जुबेली का भी सेवा मैंने की थी। और सबसे पहला तो मेरे को मेरा फर्स्ट बच्चा मेरे को रिया था, तब इस हाजरी माम ने मेरा खोड़ा भरे थे। ओह, मुबारक। इंडिया में खोड़ा भरे थे मेरा। और मेरे को सबसे ज्यादा लगता है कि मैं 20 साल तक इंडिया में सेवा करी। वहाँ घटपाट के बर्तन धोती थी, घटपाट के कपड़े धो के लेके आती थी घर पे से, आयन बायन करके न सब। और दूसरा अभी डांस के कपड़े सी थी यहाँ एटलांटा में। सब टोपी ने सब सीखे ने वहां से डायरेक्ट इंडिया से भेजती थी सब ये लोग को, में बैग भर भर के ने ये लोग को इधर एटलांटा में भेजती थी। और ये लोग को बहुत खुश होते थे, तो मेरे को भी खुशी मिलती थी। और सेवा में मेरे को बहुत सुकून मिलती थी। ने जो बापा ने खोड़ा भरे वो मैं कभी भूल नहीं सकता। सेवा में दिल में सुकून मिलता है। इस उम्र में पल में लगता है कि मैं आज भी कुछ करने की काबिल हूँ। सेवा मेरे को हिम्मत देती है, नए दोस्त बनते हैं, वक्त खुशी से गुजरता है, मौला के साथ होने का एहसास दिलाता है। मेरे को ऐसा होता है भले मेरी कितनी भी उम्र होवे, मेरे को मेरा मौला सेवा करावे उसके घर, उसमें मेरे को बहुत खुशी मिलती है। आमीन। बहुत साल से मैं इंडिया में भी करी, इधर आके एटलांटा में भी करी, इधर आके शिकागो में भी कर रही हूँ। अभी भी मैं उसमें हूँ वॉलंटियर में और सेवा देती हूँ। मेरे से जितना होता है इतना मैं कर सकती हूँ। मेरे को बहुत खुशी मिलती है उसमें। और थैंक यू। Shukran. आप और जितने भी सीनियर्स यहाँ पे हैं, और ऐसे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं जिनकी स्टोरीज हम आज नहीं सुन सकते, लेकिन उनकी वजह से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो और भी इंस्पायर होती है कि हम भी इतनी सेवा करें। कि आप लोग जितनी किए हो, आप सबसे सीख के, आपके सब स्किल सीख के हम लोग भी इतनी सेवा करें। तो थैंक यू आप सबको। थैंक यू। अभी साहिल, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी साहिल वो पूछेगा। हाँ, पर we also सिर्फ 10 मिनट 15 minutes रह गए हैं, तो like make sure to be consistent with your saying. So thank you so much for everyone who's talking. But last question, if you have to share one lesson from Seva, then what lesson would you share with everyone? आपने एक चीज जो सीखी है सेवा करने से, आप वो बता सकते हैं। जाता है Kareem Circle. I think leadership, teamwork, and hard work. So especially when everyone has a common goal to serve for our people. That's all. That's 3 lessons I think I. Wow. Wonderful. Thank you. I think teamwork is Hazri vision as well, is that he wants everyone to work together. So I'm glad that that's something that you've learned through your work as well. It lines up.
Thank you. Thank you. Work many words. Yes, work. Yeah. No word. Roshan auntie. रोशन आंटी, यानी मदद आप शेयर करें कि अगर एक कोई लेसन है जो आपने सीखा हो वह अपने सेवा के टाइम में, वो एक लेसन क्या है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, सामीने आलो एक ज वार, सामी आले 100 वार। मैं 9 साल से सेवा चालू करी, अभी तक मैं वॉलंटियर में चालू है, लेकिन मीनवाइल मैं सोइंग टीचर की टीडी पास करी और मैं सोइंग क्लास चलाती थी। मौला बापा ने इतनी बरकत दिए कि मेरी बैंक बैलेंस अभी तक थोड़ी जमा करती अभी तक इतनी है कि मेरे कोई के पास मेरा हाथ लंबा नहीं करना पड़ता है। इतनी बरकत मौला बापा ने। Very nice, very nice. माशाल्लाह, थैंक यू रोशन आंटी। Neemat auntie. इस क्वेश्चन है क्या सीखने मिला? जी, आप शेयर करें कि एक ऐसा कौन सा लेसन है जो आपने सीखा हुआ है अपने सेवा के टाइम में, जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं? बस मेरी यही इच्छा है, इसमें से मेरे को बहुत सीखने को मिला। मैं गुजराती में बोल सकती हूँ। સેવા તો આપણે જ્યારે બી નાની મોટી જે મળે એ કરી લઈએ છીએ, એમાં કઈ વાંધો નહીં। એ સેવા એ તો સેવા છે, અને મોલા બાપા બી આપણા માટે ઘણું કરે છે। મોલા બાપા આપણા માટે કેટલું કામ કરે છે, એના બચ્ચાઓને બી પ્રેરિત કરે છે સેવા કરવા માટે, અને બચ્ચાઓ બી ખૂબ સેવા કરે છે આપણી જમાતની। અને જ્યારે મોલા બાપા આપણા પર એટલા બધા રાજી થાય ત્યારે આપણને સેવાનો મોકો મળે છે। તો આપણે સારી રીતે હિંમતથી અને પેશનથી સેવા કરવી જોઈએ। આપણે કોઈ કઈ કે લીડર કે ગમે તો આપણે એને સામે જવાબ નહીં આપવાનો, પણ હસીને એમ કહેવાનું કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું મારી ભૂલ સુધારી લઈશ, હસીને જવાબ આપવાનો। અને એ સેવામાં આમાંથી મને શીખવા મળ્યું છે કે મારી બધા ભાઈ બહેનની હિંમતથી અને સબરથી સેવા કરવી જોઈએ। અને હું દુઆ કરું છું મોલા બાપા આપણને બધાને સેવા કરવાનો મોકો આપે, અને મોલા બાપા આપણા પર રાજી થાય, અને બધા સિનિયરને બધા પૂરી જમાતને સેવા કરવાનો મોલા મોકો આપે, એ મારી દુઆ છે। બસ મને એક લેસન મળ્યું કે આપણે સબરથી હિંમતથી બધાની સેવા કરવી જોઈએ। બધા આપણા ભાઈ બહેન છે, ભાઈ બહેન ગણીને સેવા કરવી જોઈએ। જે સેવા મળે એમાં એમ નહીં કે આ નાની છે મોટી છે, બાથરૂમ ધોવા મળે તો બાથરૂમ ધોવા, જે બી જમાતખાનામાં સેવા મળે એ સેવા આપણે કરી લેવી જોઈએ। અને એમાં આપણે એમ નથી કે આ નાની સેવા છે કે મોટી સેવા। તમને મુખી સાહેબ સામે બેસવા મળે તો એ બી કરો, તમને બાથરૂમ ધોવા મળે તો એ બી કરો, જે બી સેવા મળે એ તમે એકદમ હોશથી હસી ખુશીને સેવા તમે સ્વીકારી લ્યો, અને સેવા આપણે એકદમ સબરથી હિંમતથી સેવા કરવી જોઈએ। તો મને એમાં એક લેસન મળ્યો કે આપણે સેવામાં જરા બી ગુસ્સે થવું નહીં, કોઈ સાથે હસી ખુશીથી બધાની સેવા કરવાની, અને સબર રાખવાની, હિંમત રાખવાની। બે લેસન મને આમાંથી શીખવા મળ્યા છે, અને મોલા બાપાની ઘણી જ આભારી છું। મને લગભગ રોજ કઈ ને કઈ સેવા મળી જાય છે જમાતખાનામાં, અને હું સેવાથી બહુ ખુશ છું। અને સેવા કરવી આપણી ફરજ છે, અને મોલા બાપાનું આપણે લશ્કર છીએ। તો મોલા બાપાના ઘરની મોલા બાપાના ઘરની સેવા કરીએ એ તો છે, પણ આપણે બહાર બી જે સેવા મળે, કોઈ આપણે જાતા હોય રસ્તામાં અને કોઈ આપણને મળી જાય અને આપણને જરા મદદ માંગે કે ભાઈ મારો હાથ પકડ, મને રોડ ક્રોસ કરવો છે, તો આપણે જો કરાવી શકીએ તો કરવું જ જોઈએ। એ બી સેવા છે, એવું નથી કે આપણે જમાતખાનામાં સેવા કરીએ એ જ સેવા છે। જ્યાં બી સેવા મળે એ આપણને હસી ખુશીની સાથે આપણે સેવા સ્વીકારી લેવી જોઈએ અને સેવા કરવી જોઈએ। એમાં જ આપણને મોલા બાપા આપણા પર રાજી થાય છે, અને આપણે એનો રાજીપો મેળવી શકીએ છીએ। અને હું બી બધાને દુઆ કરું છું કે મોલા બધાને આ રાજીપો મેળવવા માટે તન મન અને ધનથી મોલા બધાની સેવા સ્વીકારી લે અને સેવા કરવાનો મોકો આપે।
थैंक यू सो मच Thank you so much. आंटी। और आप सबसे सीख के हम लोग भी और अच्छे से सेवा कर सकते हैं और हम भी और भी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। जैसे आप बोले कि खाली जमात खाने में सेवा नहीं होती है, जो कोई कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है, तो आप सबसे सीख के हम लोग भी अच्छे से और भी अच्छा सेवा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके साहिल, who do we have next? Nuri auntie, if you wanna. आप mute हो. I want to share something about time. Sometimes we think we don't have time to do that seva that we want to do, but once we get to it, we find out that all the rest of the things that we have to do, I don't know, somehow automatically, somehow all the things get done, and so does our seva. So there is something more to seva than just seva. Thank you. Wow. Of course. Wow. That's very well said. I think. Yeah, I think Sahil, we've heard a lot, right? The मौला का काम कभी रुकता नहीं है, so it's कभी done रुकता one नहीं. way or another. Yeah. Very nice. Thank you, Nuri auntie. Nurbanu auntie. Nurbanu sir. Sorry, Nurbanu sir. No, Nurbanu auntie. Nurbanu auntie. Are you here? Oh, Nurbanu auntie, are you still here? That's Okay. We can come back to her. We can move on to Mahmood sir. Mahmood sir. Yeah, Mahmood sir. ओके, मैं लेसन की बात करूँ, लेकिन मैं इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन हूँ, कारपेंटर हूँ, प्लम्बर हूँ और सब कुछ कार्य करता हूँ पूरा कंस्ट्रक्शन। मैंने पूरा काम जमात खाने में सीखा है पाकिस्तान में। तो शुक्र मौला, सेवा के अंदर मैंने ये पूरा काम सीखा है जमात खाने के अंदर काम कर करके। और यहाँ भी पूरे जमात खाने में कुछ भी काम होता है मैं करता हूँ। और शुक्र मौला, मुकी साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, कुछ भी काम बोलते हैं मैं ऑलवेज बोलता हूँ ओके मुकी साहब, कामरे साहब, ये काम हो जाएगा। तो इस सेवा से मुझे बहुत इज्जत मिली है। नॉर्थ ईस्ट में शुक्र मौला अपना बहुत इज्जत है और पूरा टीम वर्क के साथ है। थैंक यू। Wonderful. Thank you so much. This is very true कि हम लोग अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स लेके अपनी सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग को भी बहुत सीखने मिलता है। हम लोग को बहुत नई नई चीजें करने मिलती है, बहुत चीजें नई सीखने मिलती है जो हम लोग पहले नहीं किए हैं। तो that's a very good point. Thank you, Mahmood sir. Nurbanu auntie, are you back? I think I saw you. Maybe she's having some difficulties. That's okay. We'll go to the next one. Roshan auntie. याली मदद। आप बोल सकते हैं आपका एक लेसन आपने जो सीखा है सेवा करने से? हाँ, आपको शेयर करना है जो सबके साथ। हाँ, ओके। ये सेवा के अंदर सामी ने आलो एक वार, सामी आले 100 वार। मौला के घर की जो सेवा करते हैं, जो जितना होता है उतना अपन करते, अपने को ध्यान नहीं रहता। अपना तो काम है कि मौला का घर का सेवा करे, पर मौला की ब्लेसिंग इतनी मिलती है। मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करी थी, टीचर क्लासेस चलाती थी। मौला ने इतनी बरकत दिए, मैं इतना सेविंग में करी कि वो पैसे अभी तक मेरे अकाउंट में है और उसका मैं लाभ लेती हूँ। मौला कोई का भार रखता नहीं है। Wonderful. Thank you, Roshan auntie. आप रिपीट किए, सॉरी मैं भूल गए, हम लोग आपसे ऑलरेडी पूछ लिया। आई एम वेरी सॉरी, बट थैंक यू, आप फिर से शेयर किए। Okay. Sahil, who do we have next? Hamida auntie. Hamida auntie. Okay, I'm doing. Oh, I'm sorry. Nuri auntie, did you say something? Yeah. Yes, I wanted to say, I wanted to thank Sahila and you, Mahira, for putting all this together. Of This course. has been so inspiring. Thank you It's so been much so for inspiring. participating. Thank you. Thank you so much. Mahira gets all the props. She got me. No, that's a team effort. Team effort. I think we have 2 more left, so we'll finish that up and then we'll wrap up for the evening. Hamida auntie, Hamida Jamani, आप शेयर कर सकते हैं कि आपका एक क्या लेसन है जो आपने सीखा हो, आपकी सेवा के टाइम में जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं जो भी सेवा करती हूँ तो मौला बापा मेरे को बहुत मेरा ध्यान रखते हैं और मेरे बच्चे ऐसे दिए हैं कि वो बच्चे मेरा बहुत, वो लोग भी सेवा में है सब।
मेरी छोकरियां भी एक एटलांटा में बहुत सालों से सेवा में है, और पापा के जूठा दूध भी पिए उसने, इतनी सेवा में है। दूसरी इधर है, वो भी मेरे को इधर है शिकागो में, इधर भी मेरे को बहुत सेवा में वो संभालती है, वो खुद भी सेवा करती है, और मेरे को भी जमात खाने के नियामत है इतनी मेरे को कि मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों से। मेरा छोकरा भी इतनी सेवा में है इधर, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जमात खाने की सेवा में। मौला मेरे पे खुश रहे, और मैं बर्तन घटपाट के धोने को एवरी फ्राइडे मिलता है मेरे को, तो मेरे पे रहमत है कि मैं ये एज में भी कुछ के घर का काम कर सकती हूँ। मेरे को बहुत खुशी मिलती है ये काम करने में। Shukar. Thank you so much, Hamida auntie. And last we have Zareen auntie. याली मदद। मुझे सेवा में वो मिला है कि शांति से काम करो, कोई कुछ सामने से बोले तो आराम से उससे बात करो। और हेलो आ रहा है ना? आज पता नहीं जी कुछ जी, आ रहा आपकी आवाज आ रही है। है। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग, मैं ना गोल्डन क्लब में टिकट बेचती हूँ, तो मुझे जरीना टिकट वाली के नाम से लोग जानते हैं। तो मुझे हर जगह से फोन आते हैं कि जरीना तुम टिकट बेचते हो, तुम्हारे पास टिकट पड़ी है, मुझे तुम्हारे फंक्शन में आना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग जगह जगह से मुझे फोन करके मेरे से टिकट मांगते हैं। और लोग पहले मुझे नहीं पहचानते थे, अब जब से गोल्डन क्लब में गई हूँ तो मुझे पहचानने लगे। और योगा क्लास में जाती हूँ, तभी योगा में भी मैं वाइस कोऑर्डिनेटर हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं। यहाँ मैं हेडक्वार्टर एक जमात खाने में थी, अभी योगा में मैं जा रही हूँ तो मुझे 3 जमात खाने के मिलते हैं लोग, तो मुझे और ज्यादा खुशी हो गई कि चलो मुझे और थोड़ी तरक्की मिली है, थोड़ा सा ज्यादा मुझे सेवा करने का मौका मिला और मुझे खुशी मिलती है। मैं थक भी जाती हूँ और जमात खाने जाती हूँ, किसकी सेवा करती हूँ तो सब थकान उतर जाती है सबसे पहले तो। और बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो भी किया है जमात के लिए किया है, सीनियर के लिए किया है, बस वो मुझे, मेरे लिए वो खुशी सबसे ज्यादा है। और उसका फल भी मिला है और मिलता रहेगा बस मुश्किल से। हाँ, बच्चे भी शुक्र है, सब सही है, शुक्र मोला, शुक्र सब। Thank you so much, Zareen auntie. Nurbanu auntie, आप think आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। Nurbanu auntie, आप शेयर कर सकते हैं कि आपके पास एक कोई लेसन है जो आपने सीखा हुआ आपने सेवा के टाइम पे, और जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ये कि सेवा के दरमियान में कोई कंडीशन नहीं होती है, अनकंडीशनल सेवा करो, और कभी ऊंच नीच हो जाती तो दरगुजर करो। तो जो जितना हो सके इतना क्या कि अपने आप को इतना वो नहीं बनाओ कि भाई आपके पास से कोई बात करने नहीं चाहता हो, कि भाई बड़े होके ऐसा नहीं कि भाई छोटों को तुम एकदम नीचे कर दो। उनकी भूल होती है तो उनको समझाओ कि भाई ऐसा होता है, सेवा में तो कोई कंडीशन नहीं होती है। और क्या बोले, और मुझे तो बहुत ही मेरे मेंबर्सों की सबकी बहुत ही साथ है, इतने सालों से सेवा कर रही हूँ मैं। तो वो बीच में छोड़ दी थी, वापस लोग बहुत उसका बुलाया कि नहीं आप प्लीज करो वापस, तो शुक्र मोला भी वापस ज्वाइन करी हूँ शूज कंपनी में। हेल्थ के इश्यूज की वजह से छोड़ दी थी, फिर छोटा मोटा काम मिलते रहता है कि भाई चलो कोई सिलाई का मिला या कोई जमात खाने का कुछ काम हुआ, कुछ भी, तो शुक्र मोला के जो मिलता है वो करते हैं। तो जो सेटिस्फेक्शन सेवा में है वो किसी कोई चीज में नहीं। शाम होती तो ऐसा होता है जब भी जल्दी जमात खाने पहुंच जाए, तो शुक्र है। Wonderful. Thank you so much. And with that, that is the end of our story time. Once again, a big thank you to our seniors that took out their time. I know कि ये सबके लिए बहुत different experience था, तो thank you आप आए और आप story share की हम लोग के साथ. So we had Hamida auntie, Mahmood sir, Zareen auntie, Nurbanu auntie, Noori auntie, Nimat auntie, Roshan auntie, Alnur sir, and Kareem sir from all over the country. Thank you so much, Sahil, for moderating their questions. And thank you, Jamaat, for joining and supporting our seniors and hearing their stories. We hope you enjoyed, and we hope that you continue to stay with us during Celebration of Service Week. Thank you so much, everyone. आप लोग दोनों को बहुत-बहुत Thank you, Myra, and thank you, Sahil. Thank you, Mahira. Thank you, Sahil. आप लोग वॉलंटियर अच्छी सेवा देते हो, तुम लोग भी। हाँ, तुम्हारी you did सेवा good भी job. मौला कबूल करे। बहुत अच्छा काम है। Amin. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yali Madad.
Ali Ya Ali Madad. Madad. Thank you, Ali Madad. everyone. Thank you so much, Madad. everyone. Thank Malali you. Madad, Malali Madad.